Hello friends, welcome to the next history session of INA trials, Royal Air Force and Royal Indian Navy mutiny. Okay, so before we start this lecture, I want you to find the meaning of the term mutiny. Okay, so मैं ये expect कर रहा हूँ कि mutiny word का meaning आप लोग देख के ये start करोगे. Okay, let's move on. Indian National Army, INA. Netaji Subhash Chandra Bose revived INA with Japanese help and invaded India, the British India. लेकिन उनका पर्पस क्या था? To free Mother India from the clutches of the British Empire. He didn't wanted the Japanese to stay instead of the British, but he wanted to make India a complete independent nation. Okay, so please remember that. So हमने पहले ये देख लिया है सारा सुभाष चंद्र बोस की जो पूरे फैक्ट्स के साथ कैसे जो इवेंट्स थे वो अनफोल्ड हुए थे. सो मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं. What we are gonna see today is the Indian National Army trials. Okay, आजाद हिंद फौज भी ये बोला जाता है, लेकिन फेमसली इट इज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी. सो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट आखिर में देख लिया था. तब क्विट इंडिया मूवमेंट आते आते तक वर्ल्ड वॉर 2 वाज almost dying, और finally it died in 1945 जब जापान ने सरेंडर कर दिया. and the Britishers were high on their power. खुद के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने एक गलती कर दी जिसका नाम था INA ट्रायल्स. क्यों मैंने ऐसा कहा? लेट अस सी. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वन स्टेप बिफोर दैट फाइनल नेल इन द कॉफिन which made sure that India gained independence. This was the final nail in the coffin. Indian National Army, the INA trials, जिसको फेमसली बोला जाता है रेड फोर्ट ट्रायल्स, क्योंकि रेड फोर्ट मतलब लाल किले में से ये ट्रायल चल रही थी और उसका लाइव रेडियो टेलीकास्ट चल रहा था ऑन द रेडियो. ओके, सो ये इट्स फेमसली केम टू बी नोन एज रेड फोर्ट ट्रायल्स. वर द ब्रिटिश Indian trial by court martial of number of officers of INA between November 1945 and May 1946 for various charges. तो उनके ऊपर चार्जेस क्या लगे थे? टॉर्चर, मर्डर, abetment to murder during the World War II. इनमें से सबसे पहले कौन से थे? The first of these cases, the INA trials, first of these trials was 3 high ranking officers of INA. आजाद हिंद फौज के 3 सबसे बड़े ऑफिसर्स, कर्नल प्रेम सेगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान. ओके, सो अगेन द ब्रिटिशर्स सक्सेसफुली ऑफेंडेड 3 मेजर कम्युनिटीज इन इंडिया एट वन गो. 1857 में हमने देखा है, ठीक है. ये वापस 1957 में the history is about to repeat itself. Okay, the 3 had been officers in the British Indian Army. तो सारे जो INA ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे उनकी तरह ये तीनों भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करते थे, ब्रिटिशर्स को सर्व करते थे और प्रिजनर्स के तौर पे लिए गए. प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW बोला जाता है. They were taken as prisoners of war in Malaya, Singapore and Burma by the Japanese troops. Okay, they were British Indian officers who joined the Indian National Army and later fought in Imphal and Burma alongside the Japanese forces in alliance to Azad Hind. Okay, I hope यहां तक की स्टोरी आपके माइंड में क्लियर है. अब पब्लिक ट्रायल्स हो गई, चार्जेस हमने पढ़ लिए क्या थे, उसके पीछे का बैकग्राउंड हमने देख लिया कि ये लोग आए कहां से थे. अब ये जो ट्रायल स्टार्ट हुई तीनों ऑफिसर्स की, उसकी इफेक्ट क्या है? ठीक है. It attracted public sympathy, press publicity for the defendants. The 3 defendants we have already discussed, who were considered patriots of India. Always remember, a terrorist for one is a patriot for others. The only difference is, what does society look it as?
कुछ जो एक्ट्स होते हैं, यू कैन नेवर एवर से दे आर एक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म, बट हियर they were fighting to free their own motherland India, okay, as a whole part. So they were by many adored as patriots. तो उनकी तरफ से रिएक्शन आया और पहली बार इंडियंस ने पूछा ब्रिटिशर्स के, who are you to trial this person? हमने आपको कोई परमिशन दी है? Are you elected or are you representing Indians? That is a question which can rattle any government or any authority any day. Okay, so public sympathy was with them. They were called patriots by the Indian people who fought for the freedom of India from the British Empire. INC का स्टैंड क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now Indian National Congress will go always wherever the public sentiments are going, if they are right of course. काफी बार पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेन भी आईएनसी गया था, लेकिन इस बार पब्लिक सेंटिमेंट्स वर राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. That's why INC decided to support the INA victims. Okay, they made the release of 3 defendants. The 3 persons we have already seen. An important political issue. तो उन्होंने ये पूरे जो सागा चल रही थी उसको एक पॉलिटिकल इश्यू में कन्वर्ट कर दिया during the agitation for independence of India. So they at one go did what? एक तरफ से जो सच्चा था और जो सही था उसका साथ भी दे दिया और दूसरी तरफ लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया. ठीक है. The INA Defense Committee, अब ये याद रखना, INA Defense Committee was established by INC to defend the 3 main accused in the Red Fort trials. ये बात अपने दिमाग में बिठा दीजिए, अगर कहीं पर लिखना है तो लिख लीजिए, it will be more good. It was the committee established by INC in 1945 to defend those officers of INA who were charged during the INA trials. कमिटी कब एस्टैब्लिश की गई, क्या उसका पर्पस था, ये आपके सामने. Additional responsibilities of the committee also came to be coordination of information of INA troops that were held captive and to arrange relief work for that. तो ये कमिटी पे एक और काम डाल दिया गया कि दूसरे जो INA ऑफिसर्स हैं जिसको कैप्टिविटी में रखा गया है, आप उनकी भी इंफॉर्मेशन निकालिए और उनके रिलीफ के लिए भी बंदोबस्त कीजिए. सो INA डिफेंस कमिटी का सिर्फ एक पर्पस नहीं था, लेकिन मेन अक्यूज को डिफेंस करना भी था और दूसरे लोगों को रिलीफ रिहैबिलिटेशन वर्क में डालने का भी पर्पस उनका था. कमिटी के लॉयर्स कौन थे वो भी एक बार देख लेते हैं. भूला भाई देसाई, अ वेरी रेप्यूटेड लॉयर. अरुणा असफ अली, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ गज्जू. ठीक है, तो सारे लॉयर्स ऑफ एमिनेंस. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रायल्स. अब हमने उसकी इफेक्ट देख दी, अब उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा है वो भी देख लेते हैं. द मूवमेंट marked the last major campaign in which the forces of Congress and Muslim League aligned together. The Congress with its tricolor, हमारा झंडा हमारी शान, and the green flag of the Muslim League were flown together for the last time in this protest. Okay, outcry on the grounds of the trial as well as general emergency unease and unrest amongst the troop of the Raj forced the army chief to commute the sentence of the 3 defendants, and this is how the people's wishes and sentiments finally won over the tyrant empire of the Britishers. Okay, so finally तीनों तीन की सजा माफ कर दी गई और उनको जाने दिया गया. Okay, this is the power. When I say to you that the biggest question is the question raised by public, on whose authority you are doing this, our authority, we don't want them to suffer. Against this question, no government or no tyrant empire can withstand. Please remember that. अब RAF और RIN म्यूटिनी देख लेते हैं क्या था. ठीक है, तो INA इंडियन नेशनल आर्मी जो रेड फोर्ट ट्रायल्स थी वो हमने देख लिया. RAF रॉयल एयर फोर्स. अब ये रॉयल एयरफोर्स याद रखना वो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनी गई, मतलब दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट इंडियंस. तो RAF was a revolt by the Britishers against the Britishers. Okay, very interesting. देखते क्या था.
RAF mutiny of 1946 were series of demonstrations and strikes at several dozen Royal Air Force stations in India and South Asia. तो इनको डिप्लॉय किया गया था इंडिया का जो आईएनए का जो अटैक हुआ था इम्फाल पे उसके ऊपर, और साउथ एशिया में जो जापानीज ट्रूप ने पूरा सुमत्रा वाला कैप्चर कर लिया था उसको वापस रिकैप्चर करने के लिए इनका डिप्लॉयमेंट हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, ठीक है, जापानीज एम्पायर ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इनको वापस घर नहीं भेजा जा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? इनको डिप्लॉय किया गया था फॉर अ पर्पस, नाउ देयर डीकमीशनिंग वाज नॉट हैपनिंग, दैट्स व्हाई दे रिवोल्टेड। रिवोल्ट नहीं था, दे जस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ देयर सुपीरियर्स। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था म्यूटिनी की एग्जैक्ट टर्म देख के आइए, डेफिनेशन देख के आइए, तो ये म्यूटिनी की डेफिनेशन में फिट होगा, ठीक है। दिस इंसिडेंट्स इन्वॉल्व रिफ्यूजल टू ओबे, तो ये टेक्निकली एक म्यूटिनी है। म्यूटिनी में वायलेंस कहीं पर भी नहीं था, दे जस्ट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स। आरएएफ में, मैं आरएएफ की भी बात कर रहा हूं तो ये माइंड में रखना, ठीक है। प्रोटेस्ट अरोज फ्रॉम स्लो डीमोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मतलब वहां पर डिप्लॉय करना, डीमोबिलाइजेशन मतलब डीकमीशन करना, वहां से वापस अपने घर भेजना, मतलब ब्रिटिश एयर बेसिस पर भेजना, वो नहीं हो रहा था, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रही थी। एंड पुअर कंडीशंस ऑफ सर्विस बाय द वर्ल्ड वॉर टू एंड। द म्यूटिनी बिगेन एट कराची, आरएएफ का जो दर्ग रोड के जो बराक था वहां से, और स्प्रेड टू nearly 50,000 persons and 60 RAF stations in India and Ceylon, that is Sri Lanka, including the then largest RAF base at Kanpur. RAF का सबसे बड़ा बेस तब कानपुर इंडिया में था, वहां पर भी म्यूटिनी हुई। And by mutiny I am strictly over here meaning refusal to accept the order of superiors and RAF bases as far as Singapore. तो ये आग शुरू हुई कराची से और पहली सिंगापुर, ठीक है। During the Red Fort trials, mutiny broke out in the Royal Indian Navy, incorporating ships and establishments of RIN throughout India from Karachi to Bombay and from Vizag to Calcutta. So इसके बाद जब INA trials हुई, Red Fort trials, I told you ना, they were the final nail in the coffin. उससे इंस्पायर होके अब ये म्यूटिनी, कई जगह वायलेंस हुई थी, कई काफी जगह वायलेंस नहीं हुई थी, ठीक है। तो म्यूटिनी ब्रोक आउट इन रॉयल इंडियन नेवी। अब याद रखना इनकी भी सेम कंप्लेंट्स थी, यू आर नॉट गिविंग अस प्रॉपर ट्रीटमेंट, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टॉर्चर देयर सबऑर्डिनेट्स, और उनको अच्छी बिहेवियर नहीं मिलता था। अगेंस्ट दैट दे आल्सो रिवोल्टेड। The most significant disconcerting factor was the militant public support that it received. अब सबसे ज्यादा दिक्कत जो ब्रिटिशर्स को RIN म्यूटिनी से हुई वो थी जो उसको पब्लिक सपोर्ट मिला। At some places the NCOs in the British Indian Army started ignoring orders from their British superiors. मैंने बोला था हर जगह वायलेंस नहीं हुई थी, this were that centers, अपने सुपीरियर का ऑर्डर मानने से मना कर दिया। इन मद्रास एंड पूना द ब्रिटिश ग्रेनिसन हैड फेस रिवोल्ट विद द रैंक्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एम्पायर तब तक एम्पायर है जब तक आर्मी उसकी बात मानता है। कभी सोचा अगर इंडियन आर्मी करंटली सेज नो टू ओबे अ डायरेक्टिव बाय अवर सिविलियन गवर्नमेंट, क्या होगा? द गवर्नमेंट और एनी government is in power till the army supports it. Okay, so now the Britishers were finally surrounded from all corners, कोई political support नहीं है और अब military support भी नहीं मिल रहा, and all this is happening due to the INA trials, RAF and RIN mutiny. Importance of the above events. तो RAF RIN से क्या आया, कभी आपके मन में डाउट हो तो देख लेते हैं। Reflecting on the factors that guided the British decision to relinquish the Raj in India, Clement Attlee. Clement Attlee was the Prime Minister of Britain during after the Second World War, 46 से लेके 51 तक थे, if I'm not mistaken, please एक बार चेक कर लीजिएगा। The then Prime Minister cited several reasons. तो Clement Attlee ने after 10 years he gave a statement कि why did we leave India so soon? He said there were several reasons.
What were that several reasons? उसका आंसर उन्होंने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस had weakened the Indian army, the foundation of British in India, or Rhin Mutiny made the British realize that Indian armed forces could no longer be trusted to protect the Raj. Okay, तो जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको अंदर से खोखला कर दिया, रिन म्यूटिनी ने ये इंश्योर कर दिया कि हम भी आपको बचाने वाले नहीं हैं. Okay, so this was the statement of the man who gave independence to India. At that time he was the prime minister. This was the reason he cited. Very few people will be aware of this fact, but still this was the main statement. Although Britain had made the time of the Cripps mission in 1942, a committee for granting dominion status to India after the war suggests that INA and the revolt and the mutinies and the public sentiments they germinated were important factor made sure that India gained independence. Just go through this entire point. Okay, is that clear? So now we have completed the INA trials. वहां से हमने स्टार्ट की. द रेड फोर्ट ट्रायल्स भी उसे जाना जाता है. 3 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की वो ट्रायल थी. Finally, their sentences had to be commuted by the British Raj because people asked the most fundamental question: who are you? Okay. After that, we saw RAF mutiny, which was by the Britishers against the Britishers. Okay, on the issue of slow demobilization. And finally, we saw the Rhin mutiny, जो कराची से बॉम्बे तक और वाइजैक से कलकत्ता तक फैली. Okay, I hope all this is very clear in your mind. Thank you guys very much. And if you want to see more of our resource base, तो that is available at protalentdigital.com. आप वहां से ये सारी जो PDFs हैं वो भी ले सकते हैं, and you can download it and keep it with you for your further studies. Okay, thank you very much. This session was brought to you by ProTalent IAS Academy.